Academy पे आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम और once again good evening to all of you. So let's proceed with the topic today, what we are going to discuss. So guys, please remember the topic which we are going to discuss is not about any editorial that has been published today or yesterday, but this is about some news, some reports, some topics that has been published. Okay, so please remember this is not an editorial class. Okay, हम कोई editorial नहीं discuss करने जा रहे हैं. हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हमारा सिंपल कुछ पॉइंट्स, कुछ एजेंडास जो कि लगातार न्यूज में बने हैं. ओके, सो आई वुड लाइक टू नो दैट एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल, एवरीथिंग फाइन? कुछ पॉइंट्स, कुछ एजेंडास जो कि लगातार. Okay, so guys, I am audible, visible, everything fine, right? No issues with the audio and the video. Can I have the confirmation just? Okay, fine. Clear, no issues. Thank you. Okay, so guys, what is the point today? What we are going to discuss? Okay, so whatever the points we are going to discuss, we will be on that only, right? So audio video सब clear है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलो fine. Okay. So guys, please remember we are not discussing any XYZ topic of editorial and all, but we are going to discuss some news. Okay, those news which are continuously, constantly in news from past 3-4 days, right, in the newspapers and all. So क्या है वो? That is Chinese interest in Afghanistan, or shall we say it's Chinese interest in Taliban. दो सिंपल बातें, चाहे आप उसको तालिबान बोल लीजिए, चाहे इस वक्त अफगानिस्तान बोल लीजिए. आखिर ऐसा क्या है चाइना को तालिबान में या अफगानिस्तान में अचानक से इतना इंटरेस्ट क्यों? सो लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री फर्स्ट. हिस्ट्री, वो हिस्ट्री जब हमने आईआर शुरू किया था. सो आज से 6 महीने पहले जब ये न्यूज लगातार जो है न्यूज़पेपर्स में हमारे छपने लगी थी कि भाई यूएस और नाटो फोर्सेस पूरी की पूरी अफगानिस्तान की सरजमीन से, अफगानिस्तान की मिट्टी से लौट जाएंगी, राइट? तो ऐसे में हमने देखा था, हमने दो प्रेडिक्शंस रखे थे कि चाइना और रशिया ये फिर अब एकदम ना, मतलब भूखे शेर की तरह, एकदम भूखी बिल्ली की तरह ये अफगानिस्तान की तरफ पड़ेंगी. लेकिन सवाल निकल कर आ जा रहा था ना कि सर क्यों, राइट? Why? It was a simple logic, it was a simple question. Why Afghanistan? तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े आंसर्स थे. Yes, the mineral deposits, the uranium reserves, apart from that, the crude oil and everything. Multiple things are present there. But just minerals, just natural gases, just natural elements, just trade or something else? So obviously, it's not just the trade. Okay, it's not just the exploitation of the natural resources and all, it's much more than that. So what is much more than that? क्यों आखिर Xi Jinping government is too much interested in Taliban? Okay, क्या क्या मुद्दे हैं उन सब पर आ रहे हैं. Okay, no guys, I'm fine, don't worry. Okay, चलो, yes, favorite topic, that is Taliban. Okay. So what we have here, simple statement. Why Xi Jinping is too much interested in Taliban? मतलब अचानक से तालिबान के अंदर उनको प्यार मोहब्बत कैसे देखने को मिल रहा है? सो लेट्स फिगर आउट द फैक्ट्स गाइस. पेन एंड पेपर इन योर हैंड. ओके, प्लीज रिमेंबर, जो ये चीजें आज आप डिस्कस करने जा रहे हो, तालिबान और चाइना और रशिया का पूरा मुद्दा, पूरा जो टेंशन है आपका, आज इस एक क्लास में खत्म हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल फील द डिफरेंस इन योर थिंकिंग एंड द थॉट्स विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, द चैप्टर ऑफ तालिबान. ओके, तो याद रखना ये एक ऐसा चैप्टर है, जो एक ऐसा सेशन है जो तालिबान और चाइना और रशिया के सारे मुद्दे खत्म कर देगा. नॉट स्पेसिफिकली द होल ऑफ रशिया, हम टू बी कंटिन्यूड रखेंगे इस सेशन को रशिया के मुद्दे को लेकर, बट यस, चाइना और तालिबान की सारी कहानी आपका ये एक पर्टिकुलर सेशन आज कवर अप कर देगा. Right everyone? So why Xi Jinping? Why Taliban? Why Afghanistan? And what are the forces? What are the external forces present up there? So direct attention, China's interest in Afghanistan. अचानक से इतनी मोहब्बत कैसे, अचानक से इतना प्यार कैसे कि आज सवेरे हम देख रहे हैं कि चाइना तालिबान का जो है मैसेंजर बना हुआ है, राइट? चाइना इज वर्किंग एज द मैसेंजर ऑफ तालिबान, राइट? क्यों? तुम चाइना हो, तुम अपने आप को सुपर पावर कह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम तालिबान के लिए आवाज उठा रहे हो दुनिया भर में कि तालिबान दुनिया भर की सरकारों से बात करना चाहता है. क्या तालिबान ये बात नहीं बोल पा रहा है? या तालिबान के दूसरे अलाइज जो हैं, क्या वो ये बात नहीं बोल पा रहे हैं? So why only you? So let's figure out. So first thing, following the recent withdrawal of the US forces from Afghanistan,
China has emerged as one of the first nation. Guys, please remember चाइना, जैसा कि हमने 6 महीने पहले डिस्कस किया था, चाइना ने उसे इन्हीं 6 महीनों के अंदर सही प्रूव कर दिया है. Right? China emerged as the very first nation to develop diplomatic channels with the Taliban. Right? First thing. Now see the second point. The country is probably home to what may be the world's largest reserve of lithium. क्या बोला गया है? Country is home to world's largest reserves of lithium. China is a major player. China is a major stakeholder in worldwide lithium ion batteries. Right? अफगानिस्तान में उसे क्या दिख रहा है? सबसे पहले लिथियम, और लिथियम आयन बैटरीज बनाने में सबसे बड़ा नाम इस वक्त किसका है दुनिया में? चाइना का. Okay, that are widely used in electric vehicles and the renewable energy industry. Renewable energy industry. Guys, please pen down the very last statement. It is one of the very important elements for the renewable energy industry. And where is China right now in pressure? China is right now in pressure in degrading its carbon emission. China is right now under extreme pressure of COP21. Yes, for sure, Kyoto Protocol as well. And apart from that, the Bali Accord as well. इन सब चीजों के ऊपर इन सब चीजों की वजह से चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर दम जमा हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर, और जिसकी वजह से उसको अपनी इंडस्ट्रीज पर तो ताला नहीं लगा सकता, बट यस, उसको इलेक्ट्रिक मोबिलाइजेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है. अब इलेक्ट्रिक मोबिलाइजेशन बोले तो लिथियम आयन बैटरीज, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ऑब्वियसली लिथियम इटसेल्फ. और लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा अवेलेबल चाइना में, चाइना के नजदीक कहां है? ऑब्वियसली इट्स अफगानिस्तान. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, yes, because of keeping in mind the COP21 and Kyoto Protocol, and apart from all other international conventions with regard to the climate change and degrading the carbon emission and all, इसके लिए चाइना के ऊपर दबाव है. चाइना ही नहीं, दुनिया भर की सरकारों पर दबाव है, लेकिन हाँ, चाइना एंड यूएस बीइंग द बिगेस्ट एमिटर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, उनके ऊपर ज्यादा दबाव है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, इन सब के ऊपर बात हो रही है. ओके, और ऐसे में इलेक्ट्रिक मोबिलाइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कोप्स. राइट? और इलेक्ट्रिक मोबिलाइजेशन बोले तो लिथियम बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, क्या चाहिए उसके लिए? लिथियम. कहां मौजूद है? अफगानिस्तान. सो द फर्स्ट थिंग, व्हाई टू मच ऑफ लव विथ अफगान? ओके, राइट. चलो, चाइना क्रिएट हर्डल्स. गाइस प्लीज लिसन, नो क्वेश्चंस. अभी क्वेश्चन मत सोचिए आप लोग, दिमाग अपना थोड़ा सा शांत रखें. इस वक्त मुझे आप लोगों से कोई सवाल नहीं चाहिए. इस वक्त आप सिर्फ उन मुद्दों पर चर्चा करें जो सामने आपके लिखे हुए हैं. चाइना हैज क्रिएटेड हर्डल्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग. यस, इट हैज, बट यस, फॉर श्योर देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू बी अहेड. सो अभी क्वेश्चंस जाने दीजिए. Okay, we will have the questions later on, question answer round later on, but yes, firstly right now focus on what's written. Okay, so yes guys, good evening sir, good evening bhai, good evening F1. Okay, good evening. चलो सभी लोगों को good evening भाई. So right, okay, so what we have here? Lithium, first thing. Okay, then next, Afghanistan is also rich in several other resources. What are those resources? Gold, oil, bauxite, rare earth materials, rare earth elements, chromium, copper, natural gas, uranium, coal, iron ore, lead, zinc, gemstones, talc, sulfur, travertine, gypsum and marble. मतलब कि अगर बात आ जाए डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक यूजेज या इंटरनेशनल यूजेज या वॉरफेयर यूजेज के लिए, तो अफगानिस्तान की मिट्टी एक बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है, एक उपजाऊ मिट्टी है. इट्स वेरी फर्टाइल सॉइल. व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल्ड. उसके साथ ब्लैक गोल्ड बोले तो क्रूड ऑयल भी है वहां पर. फिर सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्साइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सब छोड़ो, कुछ भी मत देखो. इट इज हैविंग यूरेनियम इटसेल्फ, राइट? इट इज हैविंग कोल, इट इज हैविंग आयरन ओर. मतलब कि एक बहुत ही फर्टाइल लैंड जहां पर एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. नो प्रोटोकॉल्स, नो रेड टेपिज्म, कुछ दिक्कत नहीं होगी. डायरेक्ट सरकार से वहां पर डील करो. नो इंडस्ट्रीज, नो प्राइवेट प्लेयर्स, नो XYZ NGOs, नो XYZ प्रेशर ग्रुप्स, कुछ भी दिक्कत नहीं है. बस वहां पर अपनी मशीनें लेकर जानी है और खुदाई शुरू करनी है. Right? Simple statement. What it is? That they possess uranium, natural gases, copper, chromium, rare earth elements, and yes, crude oil, black gold. और कुछ है नहीं है. शुरुआत की 3 स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर, गोल्ड,
ब्लैक गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड यूरेनियम, मोर देन एनफ। बाकी सब चीजें तो कहीं भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो बहुत जगह मिल तो रही हैं लेकिन नॉट सो इजिली, राइट? सो दिमाग कहाँ है इस वक्त शी जिनपिंग गवर्नमेंट का? दैट इज ऑन द गोल्ड, ऑयल एंड यूरेनियम, एंड यस वन मोर थिंग, दैट इज द आयरन ओर। Okay, so this is where China is at the heart of Afghanistan. So, but is it all? क्या वहां पर और कुछ नहीं अवेलेबल है, राइट? केम शो सर, मजामा, एवरीवन प्लीज लाइक द सेशन। यस, उखड़े हुए नहीं, उखड़े हुए नहीं है यार, बस चाइना के बारे में डील कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा टेंशन है, राइट? ओके, सो डीलिंग ऑन विद चाइना। सो कम ऑन गाइस, नाउ अंडरस्टैंड, अफगानिस्तान से मोहब्बत की दूसरी वजह, वहां पर मौजूद गोल्ड, क्रूड ऑयल, ओके, एंड यस यूरेनियम। बट इज दैट एनफ? नो। China's Belt and Road Initiative, the OBOR, China's Strategic Belt and Road Initiative could get more reach if it is able to extend the initiative from Pakistan to Afghanistan. CPEC, right? China Pakistan Economic Corridor, और इसका next location क्या रहेगा? Obviously, it's Afghanistan. Out of the 6 core locations, 4 locations they are present in Central Asia itself with regard to OBOR. अगर आप वन बेल्ट वन रोड की बात करोगे तो इसके 6 बड़े बड़े लोकेशंस में से 4 लोकेशंस सेंट्रल एशिया से पास हो रहे हैं। सेंट्रल एशिया का दरवाजा अफगानिस्तान, कहानी समाप्त, right? So the road which is being already discussed would create a much shorter and a faster route and a convenient access to the markets in the Middle East for Chinese products. Chinese products अब मार्केट्स में, मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ऑब्वियसली ट्रेड बढ़ेगा किसका? चाइना का। एक्सपोर्ट बढ़ेगा चाइना का, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी किसकी? चाइना की। इनकम बढ़ेगी, वो अपना पैसा सीधा कहां लगाएगा? सीधा फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री में, और दूसरा यूरेनियम, बोले सॉरी न्यूक्लियर, राइट? सुपर पावर बनने की चाइना की जो चाह है, अगर आप उसमें देखें तो अफगानिस्तान उसके रिएक्टर के तौर पर काम कर सकता है। Once it has got the roads cleared from Afghanistan, and hence it is all set to indulge directly into the markets of Middle East. So the Middle East market, one of the fastest markets as well, one of the biggest markets as well, and yes, one of the biggest markets, that means one of the biggest revenue zones. Revenue that will be used directly for the military purposes, and yes, apart from the military, this revenue will be also used in enhancing nuclear. And yes, the superpower, then it will be China for sure. And the world will be under verge and under extinction because of the fear of World War III, because at the end it will also instigate US and rest of the anti-Chinese nations, बिकॉज वो फिर चुप नहीं बैठेंगे। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर आप बात रखोगे तो वो भी एक मेजर लोकेशन है अफगानिस्तान। तो सिंपल शब्दों में अगर आप यूं बोल लो, चाइना के सुपर पावर बनने का ख्वाब पूरा करने का एक सबसे महत्वपूर्ण जरिया वो कहां जाता है? वो जाता है अफगानिस्तान से होकर। लेकिन अब अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक बहुत ही अलग फ्लैग, एक बहुत ही अलग टाइप के कुछ लोग, कौन है ये? एनी आइडिया गाइस? कैन आई हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू? डू यू थिंक हु दे आर? कौन है ये लोग? जानते हैं इनको? एनीवन? ये एक फ्लैग है किसी एक ग्रुप का। कम ऑन गाइस, टेल मी व्हिच ग्रुप फ्लैग इट इज। कम ऑन, क्विकली। Taliban with their flag? No, no. It's a group with whom China is feared of. It's known as TIM or ETIM, East Turkestan Islamic Movement. The terror group China fears the most. क्या नाम है इसका? You can call it the TIM or the ETIM, East Turkestan Islamic Movement. Okay, the militant outfit present in Afghanistan itself. अब ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आप इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, बट डोंट वरी, it's always the first time and the last time as well for everything, and this is for the first time you are watching it. Okay, ETIM, ये एक ऐसी टेररिस्ट ग्रुप है, एक ऐसा टेरर ग्रुप है जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। लश्कर, अलकायदा, तालिबान, ISIS, Boko Haram, whatever, they are all present in front of the world, but ETIM, you can call it a hidden agency of the terror groups.
right? एक ऐसी organization है, एक ऐसी organization which is not present globally, which is working very silently, and it's working for the community known as Uyghur, right? Uyghur, that is a community that has faced severe mass killings or the genocide in the Xinjiang province of China, right? I specifically talk about the borders with Afghanistan, where the Xinjiang province is available, जहाँ पर China and Chinese officials, they have been accused of killing, or shall we say genocide of the Uyghur community, the Uyghur Muslims, and they have created an organization known as ETIM, known as East Turkestan Islamic Movement. Okay, an organization with whom Xi Jinping government fears the most. Right? Yes, you heard it correct. An organization which troubles China. A huge organization that troubles China, but ETIM के बारे में बहुत ज्यादा क्लियरेंसेस अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर मतभेद बहुत है. ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे द ETIM also active in Syria's civil war. सीरियन सिविल वॉर जब चल रहा था तो बताया गया कि ETIM वहां भी अवेलेबल है, वहां पर एक्टिव था, where battle hardened fighters have largely been grouped in Idlib, okay, and other northern regions. So the United Nations has categorized the group as terror organization since 2002. 2002 से इसको एक टेररिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, बट as I stated, it's one of the mysterious groups. इसके पीछे की मिस्ट्री कोई समझ नहीं पाया अभी तक. तो आइए देखते हैं पूरी कहानी. So ETIM, also known as the Turkestan Islamic Movement, okay, it is an ethnic Uyghur militant group active in Afghanistan. Where it's active? Afghanistan, right, guys? And an organization with whom China is frightened of. China is scared of. So, ethnic Uyghur militant group active in Afghanistan, a Uyghur militant group. Uyghur bole to the very same community that has suffered mass killing, that is genocide in the Xinjiang province of China. Not so good news for China for sure. And that's why another reason of mohabbat with Afghanistan. Why? Okay, mineral reserves, good. Obor, good. Third, the safety and the security of the Xinjiang province that can be troubled, that can be shaken, that can see the big, huge level of tsunami or an earthquake because of the ETIM. But the question is, does this ETIM exactly exist? So curiously, the former Donald Trump administration removed ETIM from America's terror list in November 2020. November 2020, यानी कि आज से करेक्ट एक साल पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ETIM को टेरर ग्रुप आउटफिट से हटा दिया था, ये स्टेटमेंट देते हुए कि ETIM doesn't even exist. We have no such evidence, no such concrete evidences that provide the existence or the presence of ETIM anywhere in Afghanistan or the Xinjiang province. Right? क्या मुद्दा है? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हटाओ, अमेरिका, राइट? अमेरिका ने 2020 में, नवंबर 2020 में, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को अपने में तो सपना नहीं आएगा, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उनकी जो NIA है, जो CIA है, या जो FBI है, सॉरी FBI, the CIA and the FBI, they might have given them the strong evidences, right? उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिया होगा. वो खुद पे तो ये एक्शन ले नहीं सकते थे, प्रेसिडेंट है तो क्या, कैन नॉट जस्ट डी-डेजिग्नेट एनी काइंड ऑफ अ ग्रुप, राइट? सो FBI और CIA, वहां पर जो ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लिखा है ना, डोनाल्ड ट्रंप हटाते हैं, उस पर हम डाल देते हैं the FBI और the CIA, or you can simply call it the intelligence agencies of US. What they stated, that ETIM doesn't exist. It's a hypothetical world that has been just sparked out into the market just to trouble the intelligence agencies, the security forces and all. Okay, but it's not so clear, it's not so simple. अब चाइना की टेंशन बढ़ती है क्योंकि ETIM है कि नहीं है, अब इसका अफवाह तोड़ चुकी है. वो कहते हैं ना कि धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी. So you can see here, 4 of China's 6 so-called Silk Road networks, including the China-Pakistan Economic Corridor, passes through Xinjiang. The Xinjiang that borders with Afghanistan. Those roads aim to connect China with Russia, Central and Southern and Western Asia, reaching the Mediterranean Sea. That is now Mediterranean Sea. Once they have crossed, they have entered the European markets. Okay? और अब उसके बाद the US, the UK, and they all have just criticized Chinese officials, Chinese government, and they have even imposed sanctions on the Chinese officials for
just going for the genocide for the Uyghur Muslims. But on the very opposite side, अगर आप दूसरा तरफ देखो अपने right hand side पहुंचे, according to the UN Security Council, the ETIM had roots in Afghanistan. एक तरफ US कहता है कि no, they do not exist according to the FBI and the CIA or the intelligence agencies of US. Okay, क्या बोले जा रहा है कि doesn't exist. Okay, but what we are watching that the United Nations Security Council and all. Okay, they state that yes, ETIM is actively present in Afghanistan, right? अब जिसकी वजह से चाइना की नींदें थोड़ी सी उड़ चुकी हैं. So what we can see here, Afghanistan has received support from Taliban. ETIM received support from Taliban. Guys, please pen down this thing. According to the UN Security Council, ETIM had roots in Afghanistan. Okay, as it received support from Taliban. ETIM has received support from Taliban plus Al-Qaeda in the time period of 2000s, and some experts doubt the capacity of the group to instigate violence or even its present day existence. So if you talk about the experts, obviously these are the experts available present in the US intelligence agencies. What they say that no, we don't think so, that there is something known existing known as ETIM. But वो कहते हैं ना, धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी, और जब धुआं उठा है आग लगी है, तो यानी कि चाइना की नींदें थोड़ी सी खराब हैं ETIM को लेकर. Okay, so when we talk about ETIM, East Turkestan Islamic Movement, okay, then China is not so sure whether they do exist or not, because at the end of the day, United Nations Security Council admits, United Nations Security Council का एक permanent member कौन है? खुद चाइना, जहां पर रिपोर्ट्स बताई गई है that ETIM has been supported by Lashkar, Taliban and Al-Qaeda. Let's forget about Lashkar. Let's just take the name Al-Qaeda and Taliban. And Taliban is the modern day government of Afghanistan, and hence as a result. Okay, so at the end of the day, what does makes the difference? That Taliban shall be in the pocket, or if not the pocket, then for sure at the side of China, because then only Chinese supremacy, Chinese expansionism policy, and the Chinese superpower aspirations would be able to be converted into the reality. Okay guys, all clear? समझ पा रहे हैं पूरी कहानी? चाइना को डरने की बिल्कुल जरूरत है, ठीक है, चाइना को यहां पर डरने की बिल्कुल जरूरत है. रीजन बीइंग दैट वो बस सिंपल सा लॉजिक, यूएस भले ही कह ले, हो सकता है ये यूएस की चाल हो. यूएस जानता है चाइना को अगर किसी से खतरा है तो वो है ETIM, राइट? ETIM को नॉन टेररिस्ट बॉडी डिक्लेयर करके हो सकता है यूएस चाइना की आंखों में धूल झोंकना चाहता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? नॉट अ बिग डील. That declaring ETIM as a misnomer, as a hypothetical, as a dreamboat, might be US want to spread dust in the eyes of China. Who knows that? Might be he wants Chinese hunchback, for sure. हो सकता है चाइना को झुकाने की एक पूरी कोशिश हुई. So कोई बड़ी बात नहीं, और इसीलिए, लेकिन obviously हम बात कर रहे हैं किसकी? चाइना की, और वो मजाक में नहीं लेता चीजों. तो चाइना ने अपने इस कॉशियस स्टेटमेंट्स, अपने इस कॉशियस एक्शंस को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से तालिबान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है, बिकॉज द रिपोर्ट्स व्हाट दे हैव स्टेटेड, द रिपोर्ट्स हैव स्टेटेड दैट ETIM was an organization supported by Taliban and Al-Qaeda, and hence as a result they both, okay, are now one, that is Taliban and Al-Qaeda. They have now shaken hands, and now Taliban is the government of Afghanistan, and yes, Afghanistan needs to be on my side for sure. Right up, everyone? All clear? Any questions now? Rigorously, religiously, you can call it. It has to chum up. Reasons are multiple. Not just the over, not just the natural elements, but yes, the rest of the facts as well. Because this is something which is not just a joke. Because अगर आप देखो यहाँ पर, China's foreign minister, okay, China's foreign minister Wang Yi, in July meeting with the deputy leader of Taliban, Mullah Abdullah Ghani Baradar, said he hoped the Taliban would make a clean break with all terrorist organizations, including ETIM. ये
वांग ही साहब जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई थी कब? जुलाई में। किसके साथ? वन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द तालिबान नोन एज मुल्ला अब्दुल्ला गनी, राइट। और वहां पर इसी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, राइट, यू कैन कॉल इट, वो भी एक तरीके के फॉरेन मिनिस्टर तौर पे ही काम कर रहे थे, आप कह सकते हो। इन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर या वांगी, मिस्टर वांगी हैज क्लियर्ड आउट इट्स स्टेटमेंट that yes, I hope that we hope, China hope that Taliban would be working against all the terror groups including ETIM. Actually में he just wanted to take the name ETIM, वो तो उन्होंने जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के all terror groups including ETIM बोल दिया, but उनका prime focus कहाँ था? ETIM itself, okay, including the ETIM resolutely and effectively. He stressed that ETIM possesses a direct threat to China's national security and territorial integrity. Hence proved. Okay, what he said that ETIM possesses a direct threat. Okay, direct threat to China's national security and territorial integrity. That means somewhere around the corner, Xi Jinping government is still in trouble because of the ETIM. अगर वांग यी ने फॉरेन मिनिस्टर होकर तालिबान के एक सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए सीधा साफ शब्दों में नाम लिया ETIM का और वहां पर ये बात बोली है that yes, ETIM is a threat to us. That means China has not been misguided because of the US's statement with regard to the ETIM that it doesn't exist. It's a misnomer, a hypothetical organization, a mythological organization. But China has been very conscious on its actions, on its statements that yes, Taliban, we are going to have support, we are going to have friendship, we are going to have cordial and delicate relations, but at the end of the day promise us that you are going to fight against all of those terror groups that are troubling China. And yes, all of those terror groups that are troubling China, none of the terror groups are troubling China. You haven't seen any bomb blasts, you haven't seen any firing or any kind of some mishap taking place inside the territory of China because of any terror group. Okay, what they do have trouble, they have just the trouble in the name of ETIM. And what Mr. Wangi has done the very same thing, okay, that is eliminating that very same trouble known as the ETIM. That's it, hence proved. Okay, any questions now, guys? You are free to ask the question. Suspense everywhere, yes, for sure. Why can it possible US withdraw after consulting with Taliban as well as ETIM to tackle China? प्रिया बेटा मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, कैन यू प्लीज जस्ट रीफ्रेम योर क्वेश्चन? Can it be possible US withdraw after consulting with Taliban as well as ETIM to tackle China? Okay, got it. No, US इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो ETIM और तालिबान से कंसल्ट करके निकल जाए कि अब हम निकल रहे हैं तुम्हारे हवाले वतन, ठीक है, तुम देख लेना, चाइना को टैकल कर लेना। नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है इतना बड़ा कि ETIM जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा कर लेता। वो ETIM जिसको ये बोल रहा है कि है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, US अब भरोसा नहीं कर सकता बिकॉज उसने भरोसा करके देखा है तालिबान पर 1970 के दशक में, उसने भरोसा करके देखा था लश्कर प्लस अलकायदा के ऊपर 2010 के टाइम पीरियड में जब ISIS बन गया, राइट। तो यूएस इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, ऑब्वियसली नॉट जस्ट यूएस, अगर वो वहां पर यूएस की जगह नेपाल गवर्नमेंट भी होती ना, वो भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, ठीक है। इम्पॉसिबल था, सो कैन नॉट इम्पॉसिबल, राइट। ओके दादा, चाइना क्रिएट हर्डल्स फॉर इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड जियोपॉलिटिक्स, यस व्हाई नॉट। हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल चाइना ही तो है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, इट्स जस्ट चाइना। यूएनएससी में अगर आज हम मेंबर नहीं है तो थैंक्स टू चाइना। अगर आज हमारा जो है इकोनॉमी में हमें देखना पड़ता है कि इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, थैंक्स टू चाइना। Okay, not just only thanks to China, but yes, China is one of the major players because of its anti-dumping policies and expansionism policies and its cheap products that it deploys in the foreign markets. Okay, so सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो तो obviously हमारे लिए चाइना रहेगा ही। Okay. Okay, so continuously scaremongering in the world at large for their presence, obviously those are not so much extensive. See, king of manufacturing, yes, they are. Simple logic, what we call it, that it's Chinese aspirations. And what are these Chinese aspirations? Where they do stand? They just want to tackle the superpowers and be the only superpower.
अब अगर आप बात करोगे यहाँ पर द स्टेटमेंट व्हाट यू हैव गिवन, continuously scaremongering the world. Yes, they are. Because why are they present apart? See, their Chinese presence in Malacca Strait is justiciable. Okay, Chinese government's Chinese administration presence in Malacca Strait in South China Sea is literally justiciable. Okay, वो आपके adjoining areas हैं और वो एक ऐसा area है जिस पर आपकी economy निर्भर करती है. Doesn't matters. Okay, no worries. But why are you present in Strait of Hormuz and till the Cape of Good Hope? Why you are present in the Gulf Bay? Why are you present in the Middle East? Why are you present in Syrian war? Why are you present in Afghanistan? And why are you present in the Australian subcontinent as well? Though Australia has taken you out, has asked you to move out of the Australia, but yes, why were you there? Scaremongering? No, not just scaremongering, but yes, more than that. And what is that? At the end of the day, it wants its aspirations, the dreams to be converted into the reality. That's simple statement, what we can say, right? So how China trusts Taliban? China has no other option rather than to trust Taliban. Because जो चीजें आपने अभी पिछले स्लाइड्स में देखी हैं वो आपको साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मैं तुम पर ट्रस्ट ना करूं तो कैसे ना करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, चाइना तालिबान को बस यही बोल रहा है कि यार तुम्हारे पास गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, यूरेनियम है, बाकी सारे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम इन 3 चीजों पर बात करते हैं. 4 आयरन ओर भी है तुम्हारे पास, ठीक है, एल्यूमिनियम भी है तुम्हारे पास. चलो इन 5 चीजों की बात कर लेते हैं बस. यूरेनियम एट टॉप, क्रूड ऑयल नेक्स्ट, गोल्ड नेक्स्ट, आयरन ओर नेक्स्ट, एल्यूमिनियम बीइंग द लास्ट. तो ये 5 चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं. ओके, तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू हैव गॉट द ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर मी टू ओबोर. ओके, एक बार मैंने ओबर बना लिया, उसके बाद से कौन यूएस कौन रशिया, हम आपके हैं कौन. देन नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, ETIM. तो इन सब चीजों के बाद चाइना के पास स्कोप नहीं बचता है तालिबान पर आंख बंद करके भरोसा ना करने का. वो करना चाहे या ना करना चाहे, उसके पास दूसरा कोई रिजॉर्ट अभी अवेलेबल नहीं है. ओके, सो कैन देयर बी एनी कॉन्स्पिरेसी ऑफ यूएस व्हाइल गिविंग स्टेटमेंट फॉर इट? वही बताया तो बेटा, अभी कॉन्स्पिरेसी बताया तो बिल्कुल हो सकती है. वो इस बात पर एक्शन ले सकते, वो इस बात को सोच सकते थे ना, या ये सोचा होगा मे बी कि ETIM को धुंधला सा एक ख्वाब बोलकर चाइना का उसके ऊपर से नजर हटा दें. बट यूएस की ये चाल काम नहीं आई, बिकॉज वो चाइना है. वो दूध का जला है कि नहीं पता, लेकिन हाँ, हर कदम फूक फूक कर रखता है. Okay, so next what we got apart from Xi Jinping. Okay, so guys, we are not going to discuss the whole of the Russian aspirations right now because काफी फिर mix-up हो जाएगा. Okay, हम इस वक्त रखते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को to be continued form में. Okay, what is this? It is Russia, right? Russian presence in Taliban now. What Russia has to do? You have seen today that Russia, Chinese messenger, China तो जो है चलो messenger बना हुआ है तालिबान का, but Russia is also have too much in talks and dialogues, okay, trying to create up the mechanism of proper relations and all with Taliban. Why? So ऐसा क्या मिला है पुतिन को? So engaging the Taliban, the Moscow format. कहां पर लेकर चल रहे हैं हम इतिहास को? 2017 में लेकर चल रहे हैं. We are talking about the Moscow format. What's the so-called Moscow format? So initiated in 2017. The Moscow format, okay, it is done on the 6-party mechanism for consultation between the special representatives from Russia, Afghanistan, China, Pakistan, Iran, and yes, it's me, that is us, India. सो मॉस्को फॉर्मेट 2016 में मॉस्को यानी कि ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन साहब ने शुरू किया. किस लिए? 6 लोगों का इसमें जो है भागीदारी थी, खुद चाइना, खुद रशिया और खुद अफगानिस्तान. अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट 3, पाकिस्तान, ईरान एंड चाइना, सॉरी, पाकिस्तान, इराक एंड अस, दैट इज इंडिया. वहां पर पाकिस्तान और ईरान को क्या जोड़ने का लॉजिक था, इसके ऊपर आज भी IR एक्सपर्ट सोचते हैं कि बेवजह ईरान, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर अब चल रहा था ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, 2017 की बात है ये, 2015 में डील फाइनलाइज होगी और हम देख रहे थे कि किस तरीके से 2017 का एंड आते आते ईरान न्यूक्लियर डील ऑटोमेटिकली एक जो है इतिहास बन रही थी, राइट. ऐसे में पीस प्लान के अंदर या कुछ भी कह लो, डायलॉग मैकेनिज्म के अंदर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर ईरान को जोड़ने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, और खास तौर पर पाकिस्तान, जिसका लिटरली वहां पर तो कोई रोल ही नहीं है.
इंडिया को भी एड ऑन करने के पीछे रीजन सिर्फ एक बन रहा था, दैट इज द इंडिया अफगान एंड द तालिबान ओल्डर क्राइसिस। ओके, लेकिन वहां पे पाकिस्तान और ईरान को जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं था, बट फिर बाद में समझ में आता है, एक सिंपल सा लॉजिक बस यही समझ में आता है कि यही हो सकता है मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली, दैट इज पाकिस्तान जो कि चाइना के नजदीक, वो जो कि यूएस के खिलाफ अब हो चुका था। पाकिस्तान के साथ जहां पर चाइना बना रहा है अपना सीपीईसी, और वो पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान का सपोर्ट करेगा ही करेगा किसी भी हालत में, बिकॉज उसको बलूचिस्तान पर अपनी पहुंच चाहिए, अपनी पकड़ चाहिए। तो मे भी हो सकता है पाकिस्तान को इंटरेक्ट कराने का ये रीजन हो, बट एट द एंड what is a simple statement, there was no such requirement for adding Pakistan, and yes, ईरान का तो फिर भी कोई स्टेटमेंट नहीं बैठता। once again the same very logic, ईरान की बढ़ती दुश्मनी यूएस के साथ और बाकी यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के साथ। Okay, so this was the Moscow format 2017. 6 parties, who they are: Russia for sure, Afghanistan and China. Then apart from that, Pakistan, Iran. No one knows why, and yes, we, India. And why we were? Because of the Talibani Indian and Taliban crisis. Okay, so ये रहेगा हमारे लिए to be continued की कहानी. That is why Vladimir Putin and Afghanistan too much interested, right? इनके आगे की कहानी। सो क्या है, अगर आप देखो आज के न्यूज़पेपर्स हमें क्या बताते हैं, रशिया पुट्स तालिबान ऑन प्रोबेशन विद सेंट्रल एशिया ऑन नाइफ एज। बोले तो चाकू की धार पर रशिया अब तालिबान को सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में उतारने की कगार पर आ चुका है। अब कितना सही डिसीजन कितना गलत डिसीजन, ये तो हमें हमारा वक्त ही बताएगा। Okay, everyone, so that's it with the session right now. So please remember the very simple slogan, Unacademy, let's crack it. Okay, so guys, please do not forget to like, share and subscribe, and remember what you got. Gaurav Bodania sir, okay, from yesterday's batch, 27th of October, he's there, okay, waiting for you. Quickly go on the plus, guys, because you know what we got, one subscription to crack it all. We got for you, so 25 plus 10% of the subscription offer is right now, that is in total 35% of discount. Okay, what you have to do, you will get this 10% of discount once you use my promo code. It's written here, PM UPSC 10. Okay, and this will be the Telegram channel as well. You can connect me over here. Right, so guys, we talk about the prices. GS Plus optional, Iconic GS Plus optional for tenure 1 and 2 years. The older prices here they are, but the revised ones right now with 25 plus 10%. Okay, it is 57,704 rupees and 82,275 rupees. Then you talk about Iconic GS Plus optional for 1 and 2 years. It is 1,02,000 older one and 1,55,750 older one, but the present price is revised one, 78,999 and 1,20,255. Okay, so guys, please remember what we got: the live mentoring program as well, and the raise hand feature that is much better than any offline thing. Okay, so guys, you know the difference between the Plus and Iconic. So what Plus provides you: the best educators, the live classes, structured courses and PDFs, live tests and quizzes. And where else? The Iconic is having 2 more things, that is your personal coach and means question answer writing practice. Okay, so you got these 2 things apart from this plus 4 things as well, right? So क्या करना है आपको, सिर्फ ये प्रोमो कोड डालना है PMUPSC 10 and the prices will reduce flat to 10% along with the ongoing offers, right? So same with Iconic, the promo code will remain same, guys, you have to use it, so the prices will reduce down to again 10% along with the other offers going on. Okay guys, so please remember not to forget, okay, to like, share and subscribe. See you all tonight 11 p.m. We are going to start up today with the Indian dances. Okay guys, so please see you all there, and yes, do not forget to provide your valuable feedback as well. Okay, thank you guys, see you all soon, bye bye, take care, Jai Hind, Allah Hafiz.